Hello everyone. In this worksheet, the topic is pre-writing skills. Over here, we are introducing standing line. Trace the dots to make standing lines. So over here, the child has to trace the dots to make standing lines like this. So they have to do it for all of them. तो यहाँ पे बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस के बारे में बताया गया है। तो बच्चों को दी गई जो लाइंस है, जो स्टैंडिंग लाइंस है, उसको ट्रेस करना है ऐसे और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि स्टैंडिंग लाइंस किसको कहते हैं। आप उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी रफ बुक में करवा सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice standing line. Over here, trace the standing lines and color the objects. So in this worksheet, the child has to trace the standing lines over here like this, and after doing this, they also have to color the given objects over here. They can use crayons or pencil colors to color this objects completely. तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेस करना है स्टैंडिंग लाइंस को और उसके बाद उनको दिए गए ऑब्जेक्ट्स को कलर करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इन दिस वर्कशीट द टॉपिक इज प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन. Draw standing lines. So over here the child has to draw standing lines. So initially they have to connect these two dots like this. So they have to complete doing the same for this row. Again in this row they have to connect these two dots and draw a straight line and continue doing the same for this row, that is the second row. Over here the starting point is given from where the child can draw a standing line like this, and the child has to then complete drawing the standing line in this row, and after that they have to draw the standing lines on their own in the last row. तो यहाँ पे बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को सबसे पहले यहाँ पे दो डॉट्स को कनेक्ट करके स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद उनको यहाँ पे खुद से ड्रॉ करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice standing line. Over here, draw standing lines. So first of all, the child has to connect these two dots for drawing the standing lines like this, and they have to continue doing the same for the first two rows. After that, in the third row, the first dot is given to them so that they can start from there and they have to draw a standing line and they have to complete doing the same for this row, that is the third row. And in the last row the child has to draw the standing lines on their own and complete doing the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को यहाँ पे सबसे पहले दिए गए डॉट्स को फॉलो करना है स्टैंडिंग लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और उसके बाद खुद से यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस को ड्रॉ करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing sleeping line. Over here, the child has to trace the sleeping line. So, the child has to trace the sleeping lines like this, over here, and over here. तो यहाँ पे बच्चों को स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को दिए गए स्लीपिंग लाइंस को ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice sleeping line. Trace the sleeping lines. Over here, the child has to trace the sleeping lines and complete the worksheet. यहाँ पे बच्चों को स्लीपिंग लाइंस को ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इसके बाद आप उनको कोई रफ नोटबुक में भी उनको आप बोल सकते हो स्लीपिंग लाइंस को ड्रॉ करके दिखाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन.
In this worksheet, the topic is practice sleeping line. Draw sleeping lines. Over here, the child has to draw sleeping lines. They have to connect these two dots for drawing the sleeping lines in the first two rows. After that, the starting point is given from where the child has to start drawing the sleeping line. And in the last row over here, they have to draw the sleeping lines on their own like this and complete the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो सबसे पहले उनको दो डॉट्स दिए गए हैं फर्स्ट टू रो में, जिनको वो कनेक्ट करके स्लीपिंग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक डॉट दिया है रेफरेंस के लिए और उसके बाद बच्चों को खुद से स्लीपिंग लाइंस को ड्रॉ करके ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice sleeping line. Over here, the child has to draw sleeping lines. So they have to connect these two dots like this and practice drawing the sleeping lines in the first two rows over here. After that, only one dot is given for the reference so that they can start drawing from that point and continue doing the same for the third row. And for the last row, over here they have to draw the sleeping lines on their own and complete the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों को डॉट्स को फॉलो करते हुए स्लीपिंग लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट रो है वहाँ पे उनको खुद से स्लीपिंग लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing slanting line. Trace the slanting lines, follow the arrow. So over here the child has to trace the slanting lines like this. Over here also they have to do this. And similarly they have to complete doing for the rest of the arrows that are given over here. They have to complete the ट्रेसिंग। तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बच्चों को एरो को फॉलो करते हुए ये एरोज को ट्रेस करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। In this worksheet, the topic is practice slanting line. Over here, the child has to trace the slanting lines. So here they have to trace the given line. So they have to start from here like this and trace the given lines over here. तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस को ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आप बच्चों को फिर सेम चीज रफ नोटबुक में भी ड्रॉ करने का बोल सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। इन दिस वर्कशीट the topic is practice slanting line. So over here the child has to draw slanting lines. They have to follow these two dots for drawing the slanting lines in the first two boxes. They have to continue doing the same like this, and after that one reference point is given to them for them to draw a slanting line like this. And in the last row they have to draw the slanting lines on their own. तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों को डॉट्स को फॉलो करते हुए स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट रो है उसमें वो लोग खुद से स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे और ये वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। In this worksheet, the topic is practice slanting line. Over here, draw slanting lines. So in this worksheet, the child has to practice drawing the slanting lines. So in the first two rows, they have to follow these dots. So they can draw slanting lines like this for the first two rows over here. For the third row, they have to start from the given dot and then draw a slanting line like this in each of the given boxes and continue doing the same for this row. And for the last row, they have to draw slanting lines on their own and complete the
वर्कशीट। तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing slanting line. Over here, trace the slanting lines, follow the arrow. So over here, the child has to trace the slanting lines. They have to follow the arrow like this and continue doing the same for all the given arrows like this. So they have to continue doing the same for all the given arrows. They have to trace the slanting lines and complete the वर्कशीट। तो यहाँ पे बच्चों को दिए गए जो एरोज है उसको ट्रेस करना है स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करने के लिए और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice slanting line. Over here, draw path for the cars along the dotted line. So the child has to draw the path for the cars along the dotted lines. So like this, they have to do it on the dotted lines and complete the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को दिया गया जो पाथ है जो कार्स के लिए जो डॉटेड लाइंस है उसके ऊपर से पाथ बनाना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। In this worksheet, the topic is practice slanting line. Over here, draw slanting lines. In this worksheet, the child has to practice drawing the slanting lines. So first, in the first two rows, they have to follow the given dots to draw the slanting lines like this for the first two rows, and after that one dot is given for the reference to start with, and they have to continue doing the same for the third row, and in the last row they have to draw the slanting lines on their own and complete the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करना है हर एक बॉक्स में और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice slanting line. Over here, draw slanting lines. In this worksheet, the child has to practice drawing the slanting lines. So in the first two rows, they have to follow the given dots like this over here for drawing the slanting lines, and they have to continue doing the same for the second row as well. For the third row, they have to follow the first dot and then continue drawing the slanting line like this, and for the last row they have to draw the slanting lines on their own and complete the given worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बच्चों को हर एक कॉलम में यहाँ पे हर एक बॉक्स में स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing curved line. Trace the curved lines, follow the arrow. So over here in this worksheet, the child will be learning about curved lines. So they have to trace the given curved lines like this. And they have to follow the given arrows over here. Similarly, they have to do it over here like this. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो बच्चों को यहाँ पे जो दिए गए लाइंस है जो कर्व्ड लाइंस है उनको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आप उनको इसके बाद बोल भी सकते हो कि वो लोग रफ नोटबुक में या किसी और बुक में कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। In this worksheet, the topic is practice curved line. Over here, trace the curved lines, follow the arrow. So over here, the child has to trace the curved lines. They have to follow the arrow for the same like this. And similarly, they have to do it for the
rest of the arrows that are given over here, they have to trace all the curved lines given over here. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बच्चों को ये जो डॉटेड लाइन है, जो कर्व्ड लाइन है, उसको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। उनको ये जो एरो का डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए ये लाइंस को ड्रॉ करना है और ट्रेस करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Draw the curved lines. Over here in this worksheet, the child has to draw the curved lines. They have to follow the two given dots for starting and ending point like this. And they have to continue doing the same thing for the second row as well. In the third row, the starting point is given to them. So they have to start from there and draw a curved line like this and continue doing the same for the third row. And for the last row, they have to draw the curved lines on their own and continue doing the same for the whole row. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को यहाँ पे हर एक बॉक्स में कर्व्ड लाइन को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Draw curved lines. So over here the child has to follow these dots for the starting and ending point for drawing the curved lines, and they have to continue doing the same for this first and the second row over here. In the third row they have to follow the starting point like this and draw the curved lines, and for the last row they have to draw the curved lines on their own and complete doing the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बच्चों को हर एक बॉक्स में कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing curved line. Over here, trace the curved lines, follow the arrow. So over here, the child has to trace the given curved lines by following the arrow like this, so that they can practice tracing the curved lines. They have to do the same thing for the rest of the curved lines given over here, that is tracing them by following the arrows. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बच्चों को ये जो डॉटेड लाइंस है उसको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इसको करने के बाद बच्चों को कर्व्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है वो उनको पता चल जाएगा। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Trace the curved line. So over here, the child has to trace the given curved lines and complete the worksheet like this. They have to trace all the given lines in the given butterfly and complete the worksheet. They have to do the same thing for this side as well. तो यहाँ पे बच्चों को जो कर्व्ड लाइंस है उसको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। सो ये वर्कशीट करने के बाद बच्चों को कर्व्ड लाइंस के बारे में ज़्यादा आइडिया आएगा, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Draw curved lines. Over here, the child has to take the reference of these 2 points for drawing the curved lines as shown over here. So they have to start from here and go till the second dot like this, and they have to continue doing the same for the first 2 rows in the same way. After that, in the third row, they have to start from this point and they have to draw a curved line like this and continue doing the same for the third row. For the fourth row, they have to draw the
curved line on their own and continue doing the same for the fourth row. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हर एक बॉक्स में और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Draw curved lines. Over here, the child has to take the reference of these 2 points. So this will be the starting point for drawing the curved line and this will be the ending point. So they have to start from here and go till the second point and draw the curved line like this, and they have to continue doing the same for the second row as well. After that, in the third row, they have to start from this point and draw a curved line like this. And in the last row, they have to draw curved lines on their own in the given boxes. तो यहाँ पे बच्चों को बॉक्सेस में कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing curved line. Trace the curved lines, follow the arrow. So over here the child has to trace the curved lines like this and they have to go in the direction of the arrows. तो यहाँ पे बच्चों को दिए गए कर्व्ड लाइंस को ट्रेस करना है, उनको ये एरो का जो डायरेक्शन है वो फॉलो करना है साथ साथ में. एंड सेम पूरी वर्कशीट में सेम प्रोसेस फॉलो करना है उनको और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Over here, trace the curved lines, follow the arrow. So over here, the child has to trace the curved lines and they have to go in the direction of the arrow like this. And they have to follow the same process for the rest of the arrows that are given over here in this worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है. बच्चों को यहाँ पे जो डॉटेड कर्व्ड लाइंस दी गई है उसको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. और प्लीज एम्फसाइज करिएगा कि वो लोग जो एरो की डायरेक्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू. Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Over here, draw curved lines. So over here, the child has to draw curved lines and they have to take the reference of these 2 points over here. They have to start from here and then end till here. So they have to follow the same process for drawing the curved lines in the first 2 rows. After that, the starting point is given to them and they have to draw the curved line like this and they have to continue the same for this whole row, that is the third row. After that, in the last row, the child has to draw the curved lines on their own and continue doing the same for the whole fourth row. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू. हेलो एवरीवन. इन दिस वर्कशीट द टॉपिक इज प्रैक्टिस कर्व्ड लाइन. Draw curved lines. Over here, the child has to draw curved lines as shown over here in the first box. So they have to start from the first point and extend till the second one. So like this, they have to continue doing the same for the first 2 rows. After that, in the third row, they have been given with the starting point from where they have to start drawing and then they have to draw a curved line like this in each of the boxes given over here for the third row. And for the last row, the child has to draw the curved lines on their own in each of the boxes for the whole fourth row. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हर एक बॉक्सेस में और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है. थैंक यू.
Hello everyone. In this worksheet, the topic is introducing curved line. Trace the curved lines, follow the arrow. So over here the child has to trace the curved lines over here and they have to follow the direction of the arrows. Like this, they have to do it. This will help the child in improvising their fine motor skills. तो यहाँ पे बच्चों को कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है, यहाँ पे जो एरो दिया गया है उसको फॉलो करना है उनको और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Trace the curved lines, follow the arrow. So please help the child recall to follow the direction of the arrow and trace the curved lines given over here and complete this worksheet. So for all these curved lines, they have to trace it and complete the worksheet. तो यहाँ पे बच्चों को सारी दी गई जो कर्व्ड लाइंस है उसको ट्रेस करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। Hello everyone. In this worksheet, the topic is practice curved line. Over here, draw curved lines. So the child has to draw the curved lines in this worksheet as shown over here in the first box. So they have to start from here and go till here. Start from here and go till the second point or the second dot, and they have to continue doing the same for the first two rows. After that they have to start from here, that is the dot which is given, and they have to draw the curved lines and they have to follow the same process for the rest of the boxes given in the third row. After that they have to draw the curved lines on their own in the last box, that is the last row given over here. तो यहाँ पे बच्चों को हर एक बॉक्स में कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है जैसी यहाँ पे दी गई है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। In this worksheet, the topic is practice curved line. Over here, the child has to draw curved lines. So they have to start from here and go till here till the second point. Like this, they have to draw the curved lines for the first two rows. Over here. After that, in the third row, they have to start from here and draw a curved line like this. And they have to continue doing the same for the third row. And for the last row, the child has to draw the curved lines on their own and complete this whole row. तो यहाँ पे बच्चों को हर एक बॉक्सेस में कर्व्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू।